जी मेरा नाम सुहेल फयाज है। सुहेल, चूंकि कश्मीर वादी जो हम क्राफ्ट के लिहाज से इसकी एक अपनी इफादियत है और रिसेंटली जो इसको यूनेस्को लिस्ट में भी लाया गया है, चूंकि आज जो ये विजिट हमारा यहाँ है कितना अहमियत का हामिल है। जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के लोग तकरीबन 15 ममालिक से जो डेलीगेट्स आए हैं, क्या हम मान सकते हैं ये एक मेन पर्पज़ है फॉर द प्रमोशन ऑफ कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट? जी शुक्रिया। ये एक मेन, अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड काउंसिल के, ये 15 ममालिक से आए हुए हैं। सो ये आप देखेंगे कि हमारे इस क्राफ्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक मुख्तलिफ 15 ममालिक्स में ये प्रमोट किया जाएगा। लाइक उनके यहाँ भी ये दिखाया जाएगा कि लाइक हमारे जो आइटम है कि कितना अहमियत रखता है। जो कश्मीर आर्ट के रिलेटेड जो भी हमारे आइटम्स है, चाहे हमारा शॉल हो, चाहे हमारा कारपेट हो, चाहे हमारी कोई भी सनत हो, सो ये वर्ल्ड में कितना अहम मायने रखता है। तो आपके यहाँ खास तौर पर किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ रिसाइकल्स में देखते हैं? स्पीविंग भी हो रही है, सेटिंग हो रही है, डिजाइन किए जा रहे हैं। So, शॉल सारे आइटम्स शॉल के साथ रिलेटेड है? ये सारा शॉल के साथ हमारे यहाँ सारे किस्म के शॉल्स बनते हैं। लाइक अगर हम कानीज़ की बात करेंगे, एक तो हम कानीज़ भी बनाते हैं, सौजनीज़ भी यहाँ पे मिलते हैं, और प्लस हम यहाँ पे ब्लैंकेट्स, थ्रोज वगैरह वो सब भी बनाते हैं यहाँ पे। तो कितनी उम्मीद करेंगे जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की टीम 15 ममालिक से आए हैं एक एम्बेसडर बन के यहाँ से जाएंगे, ताकि जो कश्मीर आर्ट जिसमें काफ़ी डाउनफॉल भी बहुत टाइम पे हुआ था ड्यू टू द सिचुएशन, अब लेकिन कोशिशें की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट इदारों की तरफ से इसको अपलिफ्ट होना चाहिए। हाँ, हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि इस क्राफ्ट सफारी की वजह से भी ये इंशाल्लाह बहुत प्रमोट हो जाएगा और लोगों की नज़रों में वापस, लाइक फ्रॉम जब से हमारे यहाँ जीआई का ये इनोवेशन हो गया, तो तब से इस क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ये प्रमोशन मिल गई ऑलरेडी, शुक्र अल्लाह का। और हमारे यहाँ जो डायरेक्टर महमूद साहब, तो उनने जब से इस पे काम किया है, तो वी आर ऑल थैंकफुल टू हिम कि उनने भी इस पे बहुत अच्छा काम किया है। सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा ही रिजल्ट आएगा इसके लिए, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर ऑल द क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू।
katkı yok. Her şey var. Hafif atmam ya bana. Vesaire. Okay. Waalaikum salam. Swear. Well, this is what traditionally, let's say Laura Piana calls it baby cashmere, right? Yeah. It's always below 15 microns, so somewhere between 13 and 15 microns is what we quality of cashmere in the world. And it's all hand spun. So Mian K has been she's a mini celebrity around here. If you see a picture on the other side, you'll see who she is. So first she is combing. First step is combing sapani. Now the second step is sapani. This is the world's finest yarn which she is making right now. Like if a woman sits for the whole day for the 8 hours, she can complete 6 strands. Okay, traditional charkhas were those. So the government, you cannot work with this yarn. You have to only hand loom it. Very important process in anything in Kashmir when it comes to Pashmina, because this brings in. I mean, 99.99% people doing it are always women who do the spinning. Yes, of course. And you can count. It's so fine that yarn breaks a number of times. That's what is happening here. Because once we have to do drafting, these make the sequence for the draft. The easiest to be for the woman who drafts this. We will show that part at upstairs. One warp number they have mentioned. This is having also the Was it before with the wooden? Was it wooden before the sticks? no. Always these were the iron rod. Another, if we have to make the 10 shawls or 12 shawls or more than that, for that we use warp drums. Now we'll go to the Cut, no? That's cut. Yes, they cut. Yeah. we're talking about the natural dyes. So, okay. It could be another option. Yeah, we are trying that. We are get the SRM from our designers, like how we have to make shawls. So this is the SRM sample. So first thing, it gives us the direction of like the selvage we have to use another color and the metal body we have to use a different. And we get then we go for the drafting. Like this is the drafting. For purposes we kept the iron rods too closer. So this is the drafting process. And this one they make these shawls. Like the carpet, we put the same like a carpet. Yeah. So traditionally we were having different colors, different Been an innovation in recent times. So the colors of the and again we have different color combinations. So for this we have to change the colors. We have to follow. And
you talk about this, like for this, we got the challenge. So if you know, Yeah, challenge is like for like 3 dots at the best one and for 4. our home furnishing line. So we're doing it home. So when I was going to go back, I was like, they're always looking for some interesting. Numbers of homes for the walls. She would love to come and visit. I don't understand it. No, I would be shocked. I'm a private business. Okay. And that we use if you have to make the other product like Coke, you have to make the fans. For that, I that enhances the shelf life of the product. So here we are making the Kani sari with pashmina. So these are the Kani sari. In Pallu we have made the Kani Pallu, and now he is making the plain part. So we'll show the SRF for this particular as well. So this is SRF for this particular product. Please, Kani spatter. Can I give you some And here we have to use the plain. Do you mind just me putting it on such a Absolutely. And the techniques are precisely what they would have done like a few hundred years ago. Please. Professor Aftab Gada. From? I'm actually from Birmingham, UK. Right now in the Kashmir Valley, as you know, the Kashmir is the second name of the paradise due to the natural bounty. But apart from that, we have a very wonderful, unique craft. Yes. So, what is the purpose of the visit right now? One of the workshops here where the Pashmina shawl is going on. Well, we're representing the World Craft Council. I'm the president of the WCC for the Europe region. We've actually been attending some awards and a special World Craft Forum to celebrate 60 years of the World Craft. So obviously a lot of the crafts that we're looking at here are part and parcel of its heritage and history. So we're very, very keen now to explore how we can actually help the artisans even more. Apart from that, we're also very, very proud that Srinagar now is also has the status of World Craft City, which has been bestowed by World Craft Council. So that's part of the purpose. And now we're also wanting to have an opportunity to face-to-face meet some of the artisans, the production houses and so on, the difficulties that they may be facing and so on. So we want to identify and how we could be in a position to help. You have seen with your own eyes the craft of Absolutely. the Pashmina shawls, and you interact also with the artisans. Yes. How do you find the Kashmir craft? Oh, absolutely amazing. I mean, I've grown up with that particular notion and craft anyway, but to see it firsthand and seeing the craftsmen actually doing their, that tedious technical work, which demands a lot of patience. And I think that's what people forget when they're paying for that value and that time and the skill, which is thousands and maybe hundreds of years old. Because when you see in the shops and so on, a lot of the fakes and so on, you don't value the actual craft. Exactly. And I think that's where we really feel very hurt for the artisans, because their work and craft and expertise has been exploited by sort of other nations who are only interested in fake articles. So that's what we're, all part and parcel of what we're interested in. Can we expect with the help of the World Craft Council visit that you will try to become an ambassador for the Kashmir so that this old-aged craft will promote at large scale in future? Absolutely. I mean, that's what World Craft Council is about, is to help and empower the artisans and so on all over, and that's what we exist for, and that's what we intend to continue. And now, as I said, with Srinagar part of the network of World Craft City, it'll only help to empower and increase their awareness throughout the world. So yes. Mr. Aftab, thank you very much for being with us. See you tomorrow. Yeah, thank you very much. मैं वजाहत हुसैन मुतू हैंडीक्राफ्ट से
वजह साहब चूँकि वादी कश्मीर जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से मशहूर मानी जाती है, ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के इस वक्त तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोग यहाँ पर आए मुख्तलिफ कंट्री से, इसका पर्पज़ क्या है और कितना हम एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारा विरसा है इसको प्रमोशन में? बेसिक पर्पज़ इनके विजिट का यही है कि हम अपने जो आर्ट और क्राफ्ट हमारा उसको कैसे प्रमोट करें थ्रू आउट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. ये जो डेलीगेट्स आए हैं ये आए हैं अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स से आए हैं. तो कश्मीर जो कि क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स के बड़ा मशहूर है, इसको और फ़रोग़ देने के लिए इनको यहाँ मौजूद किया गया है. तो ये मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे जा रहे हैं, आर्टिजन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? जी, ये आज डिफरेंट जो हमारे क्राफ्ट्स हैं यहाँ पे वहाँ पे जा रहे हैं कि बेसिक उनकी नॉलेज जाने के लिए कि हाउ ये कैसे बना रहे हैं, कैसे ये वजूद में आते हैं. तो उनको वो बेसिक नॉलेज देने के लिए हम उनको डिफरेंट जो हमारे यहाँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं वहाँ पे उन वर्कशॉप्स पे ले रहे हैं. मान सकते हैं कि एक डेवलपमेंटल स्टेप है क्योंकि यहाँ से जाकर ये एम्बेसडर्स बने. जी, हम इसीलिए इनको मौजू किया है कि सो दे विल पुश ए गुड वर्ड ऑफ माउथ थ्रू आउट देयर कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे हैव कम फ्रॉम. कितने लोग कितने कंट्री से आए? ये आए हैं 16 डेलीगेट्स हैं जो कि लगभग 10 कंट्रीज से आए हैं, डिफरेंट 10 कंट्रीज से आए. इनके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज से जो आर्टिजन्स आ रहे हैं जो कि अपना आर्ट शोकास करेंगे SKICC इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में 26 और 27 को. थैंक यू. It was just to show you guys, not otherwise. We don't use that anymore. It was just to kind of. Women have to come into a centre, or you provide the equipment for We, their we, help? so we've given 300 of them. At home, they can work from there. They don't have to only work with me. They can work with anyone else. Whoever pays them better. They don't have. There's no obligation as a private initiative. So we've been covered by many earlier. Anyway, so this is what the whole. So as you can see, Sil, would you like to? İşine yad gel, şu mağazada basa acil bir. Sen iyi misin? Ata gona falan durmaz mı anladın? Ya şu ikisine de savun, hoşunu var mı yan gel ki? हाँ Nacho te काम नहीं नियारा, तो शुक्र है ये कुछ नहीं निया. Sanam पेटा. अभी तो मगर बदला है. मुझे ऐसा कंसंट्रेशन कहाँ पे? बखुदा तो सोच कसम जात का खुदा क्यों है? आपसे वैसे कसम मुझे किसका? kendine alacak gerek. Hiç ne yapacak? Belki aktabız bu.